welcome to Learn with Zenith Guru. My name is Pratiksha Dwivedi and today we will be studying about class 6 science first chapter, that is food. Where does it come from? If I ask you that what is the very first word that strikes your mind when you hear the word food, it will be, like most commonly, it will be necessity. Because yes, food is a necessity for every living organism. Food gives us the required amount of nutrition that our body needs in order to grow, in order to have strength, in order to have the ability to work. So, food can be considered as a necessity not just for humans but for every organisms, because it gives us all the required nutrients that our body wants. Okay, so talking about food and where does it come from, in this chapter we'll be studying about how do we obtain food, its various sources, what are ingredients, what do animals eat, and their classifications. Okay, so I would like to start with the chapter. What did you eat at home today? In Indian households, let's say dal, chawal, roti are very common food items that we eat in our daily routines. Okay, so here we'll see what does ingredients means. Okay, so I would like to talk about various food dishes. When we talk about food dishes are not just made from one simple source. They have a lot of ingredients involved in it. Okay, it can be made from 2 3 or different things. So what do these things are technically called? They are called ingredients. Okay, I would like you to read that. Think about rice cooked at home. We take raw rice and boil it in water. Just 2 materials or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. Let's say water is required and rice is required. So what is water and rice here? We'll term that we'll be terming them as what? Ingredients. Okay. Now here's this another example. On the other hand, some food items are made with many ingredients. To prepare vegetable curry, we need different kinds of what? Vegetables, salt, spices, oil, and so on. What are these called? These are called ingredients. Okay. So now I guess it's almost clear that what does an ingredient mean? The number of items that we use to prepare a particular dish. Okay. We have almost, we would have seen if we are watching a cookery show that if they're preparing a dish, they would give an ingredient list. In that ingredient list, all the items that are required to prepare a specific dish are listed. Okay, moving on. We'll see food material and their sources. Okay, so food materials, whatever we eat, they must have some sort of source, right? From source, what do we understand? From source, we understand the place from where they originate. वो कहाँ से एक पर्टिकुलर खाने की चीज पैदा हो रही है, कहाँ से वो आ रही है हमारी प्लेट तक, उसको हम कहते हैं फूड, और उसका क्या सोर्स है. ठीक है, तो जनरली यहाँ पे जैसा कि दिया है, 2 सोर्सेस होते हैं, एनिमल सोर्स और क्या होता है आपका प्लांट सोर्स. ठीक है, एनिमल सोर्स में क्या होगा? When we talk about animal source, it will have various animal based products, and when we talk about plant based, it will be the food which has a source, which has plant as its source. Okay,
So animal source is animal-based products and plant source is plant-based products. Okay. So when we talk about plant-based products, what can we think? Okay, so let me give an example. While we are going to our village or we are traveling in some train or bus, let's say, we've seen a lot of farms around us, while especially when we are on highways. So what are these farms loaded with? They're loaded with various types of crops. Mainly what do we get to see? Mustard, wheat, jowar, bajra, rice. It depends on the season. But whatever we obtain, whatever the kind of food we obtain from them will be called plant-based food item or plant as its source. Okay. What do we get? We get wheat, we get rice, we get various veggies, vegetables, we get fruits. All these things are obtained from plants. Okay, various spices and pulses, cereals, etc., etc. They are all plant based. I would like to simplify it again. जो भी हमें प्लांट से मिलता है खाने को उसे हम क्या कहते हैं? प्लांट बेस्ड. और जो भी हमें एनिमल से मिलेगा खाने को उसे हम कहते हैं एनिमल बेस्ड. तो when we talk about animal based, what will it be? It will be chicken, it will be mutton, it will be fish, and not just the meat portion, even milk, ghee, curd. They'll be considered as what? They'll be considered as animal based products. Okay, it's pretty obvious that why we call chicken, mutton and fish as animal based products. But why do we call milk, ghee and curd as animal based products? Okay, so first of all, मैं ये बताना चाहूंगी कि मिल्क से ही हम कर्ड और घी ऑब्टेन करते हैं. हम इसको मान सकते हैं कि कर्ड, दही या घी मिल्क का एक बाय प्रोडक्ट होता है. बट मिल्क कहाँ से आता है? आजकल मार्केट में प्लांट बेस्ड मिल्क्स आते हैं जैसे कि सोय मिल्क, आलमंड मिल्क एटसेट्रा एटसेट्रा, मेनली फॉर द वीगन पीपल. बट देन वी आल्सो हैव मिल्क which we commonly use and which is obtained from cow, buffalo, goat, sheep, camel, etc., etc. So what are they? They are also considered as animal products because we are getting them from a certain animal. So we also contain all the meat portion plus milk, ghee, curd, whatever is coming from an animal, that particular thing and its byproducts will be considered as what? Animal sources. Now I would like to draw your attention towards this particular table which may make things pretty easier for you. By far we have learned ingredients and what the sources means. Okay, so here when we talk about idli, what does idli comprises of? क्या उसके ingredients होते हैं एक इडली को बनाने में? क्या होता है? राइस यूज होती है, उड़द दाल यूज होती है, सॉल्ट यूज होता है, वाटर यूज होता है. वाटर को छोड़ दीजिए. टॉकिंग अबाउट राइस, सॉल्ट, talking about rice and urad dal, where do we get these from? We are not getting these from some animal, right? राइस तो हमें प्लांट से मिलता है और उड़द दाल भी हमें प्लांट से मिलती है. सो हम इडली को क्या कंसिडर करेंगे? एक प्लांट बेस्ड डाइट कंसिडर करेंगे क्योंकि इसमें यूज होने वाले सारे इंग्रेडिएंट्स, मतलब जो मैक्सिमम इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमें किससे मिल रहे हैं? प्लांट से. उनका सोर्स क्या है? प्लांट है. अगेन एक कॉन्ट्रडिक्टरी डिश हो जाएगी यहाँ पे चिकन करी. ठीक है, इसमें क्या यूज हो रहा है? चिकन यूज हो रहा है, स्पाइसेस यूज हो रही हैं, ऑयल एंड घी यूज हो रहा है. Chicken क्या है? As I've already told, we obtain it from an animal, so it's an animal-based product. And spices, we obtain it from various plants. So spices will be considered as a plant-based product, and the source of spices is plant, but the source of chicken is animal. Again, here you can see oil/ghee. So if it's about oil we get from various kinds of seeds, plant seeds. So it's a plant-based product or its source is the plant.
फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड, सरसों, सरसों का तेल बहुत ही कॉमन है, मार्केट्स में मिलता है, हमारे घरों पे होता है। वो क्या है, एक प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है क्योंकि वो हमें सरसों से मिल रहा है। बट when we talk about घी, घी एक एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट है, और वो क्यों है वो मैंने आपको मिल्क घी कर्ड वाले एग्जाम्पल में एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चिकन करी का जो सोर्स है वो एनिमल भी है और प्लांट भी है। ऐसे ही खीर का एग्जाम्पल दिया है, अ वेरी common and a famous delicacy in Indian households. What does it contain? It contains milk, it contains rice, it contains sugar. Again, just like ghee, the same example of milk. Milk is an animal product, animal source. Rice is a plant product, and sugar, sugar is obtained from sugar cane, so it can also be considered as a plant product. Okay, moving on. Here, by far, what have we learned? We have learned what ingredients mean. We have learned what animal-based sources means. We have learned what plant-based sources means. Now we'll study about plant parts and animal products as food. Okay. So अगर हम एक plant का example लें, तो जरूरी नहीं है कि उसका सिर्फ एक ही part हम खा सकें, ठीक है? उसके वेरियस ऐसे पार्ट्स हो सकते हैं जो हम खा सकते हैं, जो हम नॉर्मल यूज करते हैं, हमारी क्या कहते हैं किचन में अवेलेबल होते हैं, ठीक है? उससे पहले आई वुड लाइक टू टेल दैट हियर इट इज रिटन सम प्लांट्स हैव 2 or more edible parts. Okay, so what does edible means? Edible means something that can be eaten. Okay, edible का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जिसे हम खा सकते हैं, जैसे कि मिल्क एडिबल है, राइस एडिबल है। टॉकिंग अबाउट पेपर, पेपर इज नॉट एडिबल, राइट, क्योंकि हम उसे खा नहीं सकते। सो एडिबल मीन्स एनीथिंग दैट कैन बी ईटेन और दैट वी कैन ईट, जो हम खा सकते हैं। तो इसमें यही लिखा है कि कुछ प्लांट्स के 2 से ज्यादा चीज, 1-2 से ज्यादा ऐसे पार्ट्स हो सकते हैं जो कि एडिबल है, खाए जा सकते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे फेमस एग्जांपल हो जाएगा किसका? मस्टर्ड का। मस्टर्ड हमारी सरसों होती है, ठीक है? अब इंडिया में स्पेशली विंटर्स में एक बहुत ही, स्पेशली इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, एक बहुत ही पॉपुलर डिश है जो ऑलमोस्ट सर्दियों में हर घर में बन जाती है, जिसे हम कहते हैं सरसों का साग। अगेन इंडिया में एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ऑलमोस्ट आपको हर घर में मिलेगा, विच इज मस्टर्ड ऑयल। ये क्या है? हमारा सरसों का तेल। और ये क्या है? हमारा सरसों का साग। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है सम प्लांट्स हैव 2 or more edible that is eatable parts, तो उसमें एक सबसे बड़ा एग्जांपल हो जाएगा किसका? मस्टर्ड का। हम मस्टर्ड के पत्ते भी पका के खा सकते हैं, जिसे हम सरसों का साग कंसिडर करेंगे। और हम मस्टर्ड के जो बीज हैं, जो उसके सीड्स हैं, उसको हम उससे हम तेल ऑब्टेन कर सकते हैं, जिसे हम मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं। तो अगर हम मस्टर्ड का एग्जांपल लें तो मस्टर्ड की लीव्स भी एडिबल हैं और मस्टर्ड के सीड्स भी एडिबल हैं। ओके, ऐसे ही हम यहाँ पे दिया है यही, सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल। नाउ वी आर मूविंग ऑन। हियर वी लर्न व्हाट स्प्राउटेड मीन्स। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है? Take some dry seeds of moong or chana. Put a small quantity of seeds in a container filled with water and leave this side for a day. Next day, drain the water completely and leave the seeds in the vessel. Wrap them with a piece of wet cloth and set aside. The following day, do you observe any changes in seeds? Sprouts बहुत famous है, स्पेशली जो हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं, फिटनेस कॉन्शियस लोग होते हैं, एंड ऑल्सो जिन लोगों को डॉक्टर या किसी ने प्रिस्क्राइब किया होता है कि उन्हें एक बहुत ही सिंपल फाइबर रिच डाइट लेनी है, उन लोगों के अमंग्स क्या सबसे ज्यादा कॉमन होता है? स्प्राउट। तो स्प्राउट्स कैसे ओरिजिनेट होते हैं और कैसे जर्मिनेट होते हैं? मूंग या चना, ठीक है, उसे हम
एक किसी भी बर्तन में पानी भर के और उसे डाल दें, और उसके बाद ओवरनाइट सोक करना है। अगले दिन पानी छान के उसे ड्रेन करके एक वेट क्लॉथ में उस पर्टिकुलर मूंग या चने को रैप करके रख देना है। कुछ टाइम के बाद हम उसमें कुछ ऐसे व्हाइट रूट लाइक स्ट्रक्चर देखने लगेंगे, ठीक है। जैसे नीचे लिखा है स्मॉल व्हाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड। अगर ऐसा होता है तो हम क्या कहते हैं कि वो पर्टिकुलर चना या वो पर्टिकुलर मूंग क्या हो गई है, स्प्राउटेड है। दिस इज स्प्राउटेड, ओके। If not, wash the seeds in water, drain the water, leave them aside for another day, and then repeat the same process, because it is not always possible that in a particular time period the particular ingredient moong or chana will be sprouted. Okay, these white root like structure that start germinating are called sprouted chana. Here it is written, cover with wet cloth, next day see if the seeds have sprouted. पीछे हमने मूंग का एग्जांपल देखा था, स्प्राउटेड मूंग। यहाँ पे हम किसका एग्जांपल देख रहे हैं, स्प्राउटेड चना, ओके। उसके बाद यहाँ देखिए, हैव यू सीन अ बी हाइव? बी हाइव क्या होता है, मधुमक्खी का छत्ता, ठीक है। Where so many bees keep buzzing about, bees collect nectar, okay. I would want you people to remember this word because it's very very important. Nectar. What is nectar? Okay, so nectar is the juice from flowers, the sweet juice from flowers that are collected by bees. Sweet juice from flowers collected by bees. Okay, nectar is the sweet juice from flower जो कि bees collect करती हैं, अपने छत्ते पे जाती हैं, and then they create what? There is this certain process of creating honey. तो हनी हमें कैसे मिलता है, बीज से। बीज उसे किससे बनाती है, नेक्टर से। नेक्टर क्या होता है, स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर्स जो कि बीज कलेक्ट करती हैं, अपने बी हाइव्स में ले जाती हैं। आपने देखा होगा हनी कोम्स होते हैं ऐसे। व्हाट आर दीज? दीज आर हनी कोम्स, जिनसे हमें हनी ऑब्टेन होता है। मूविंग टू नेक्स्ट, नाउ हियर वी विल अंडरस्टैंड कि कितने टाइप, मतलब जो एनिमल्स होते हैं वो किस टाइप का खाना खाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 एग्जांपल्स दिए हैं, herbivores, carnivores and omnivores. So we'll study them in detail because this is the core of the subject. I'm so sorry, this is the core of the chapter. Herbivores. What was the next one we read about? Carnivores, followed by omnivores. Okay, so why are they classified into 3? For whom are they classified? They are classified for animals. And what kind of food do they eat? What do they actually eat? Okay, so when we talk about herbivores, herbivores solely depend on plants. They eat a plant based diet. They will only eat plants. You can never spot them eating anything that is beyond plants. Okay, so if we talk about an example of herbivores, it will contain what? Cow, camel, sheep, goat. I'm sure we have seen them grazing around in green fields, green grasslands. So what do they graze? They graze plants or grasses because they feed onto it, and they are called what? They're called herbivores because only plant-based diet is what they follow. Moving on to carnivores, they follow only meat-based diet. इसका मतलब है अगर herbivores खाएंगे तो सिर्फ हरे
पौधे या प्लांट्स या कुछ लीव्स, ग्रासेस ऐसे खाएंगे, और अगर कार्निवोर्स खाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ मीट खाएंगे. यू कैन नेवर स्पॉट अ लायन ईटिंग ग्रासेस. तो कार्निवोर्स का सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल होता है लायन और क्रोकोडाइल. ओके, another important factor that carnivores have is their dental structure, which is very very important. All the carnivores have sharp teeth. Our nature has so beautifully designed and differentiated amongst them. Nature has given carnivores sharp teeth because nature knew that they'll develop into an organism that will only depend on a meat based diet. So sharp teeth क्यों जरूरी हैं? अगर उनके teeth शार्प नहीं होंगे तो वो मीट को टियर नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर्ली च्यू नहीं कर पाएंगे, कंज्यूम नहीं कर पाएंगे. ठीक है, मूविंग ऑन टू द लास्ट वन, दैट इज omnivores. Omnivores क्या होते हैं? मीट प्लस प्लांट और बोथ. They consume meat, they may consume plants, or they may consume both. What is the biggest example when we talk about omnivores? It will be crow and humans. Humans have a vegetarian diet, plus they may also have a non-vegetarian diet. We may eat roti, but we can also consume chicken curry. Same goes with the case of crow. If you throw a roti towards a crow, the crow will eat it, and if a crow finds a flesh line, the crow will also eat the flesh. So people who eat both meat and plant-based diets are called what? They are called omnivores. And what are the prominent examples of them? Humans and crow. Okay. I would like to add two other subcategories here, which will be scavengers and what? It will be decomposers. Who are scavengers? Scavengers are organisms that feed on already dead organisms. Okay. So what is the prominent example of it? It will be vulture. अगर एक vulture उड़ रहा है, for example एक जंगल के ऊपर से उड़ रहा है, और अगर उसने नीचे देखा कि शेर ने ऑलरेडी हंट करके डियर को मार के गिरा दिया है और वो खा के उसे चला गया है, तो वो वल्चर किस पे फीड करेगा? उस पर्टिकुलर डेड पीस ऑफ मीट जो कि किसका है, और उस डियर का है जिसको ऑलरेडी शेर खा चुका है. तो स्कैवेंजर्स उन्हें खाते हैं. और अगर हम डिकम्पोजर्स की बात करें तो इसमें सबसे पहला नाम जो हमारे दिमाग में आएगा वो होता है अर्थवॉर्म. इनके नाम में ही लिखा है डिकम्पोजर्स, मतलब जो ऑलरेडी डिकम्पोज्ड फूड खाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमने एनिमल्स एंड व्हाट डू दे ईट को तीन मेजर कैटेगरीज और दो सब कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया. क्या होगा? हर्बीवोर्स ओनली प्लांट बेस्ड डाइट, कार्निवोर्स ओनली मीट बेस्ड डाइट, ऑमनिवोर्स प्लांट प्लस मीट और बोथ. दोनों के तीनों के एग्जांपल्स एक बार फिर स्टडी कर लेते हैं. काउ, कैमल, शीप, गोट, लायन, crocodile, okay, and then what? Crow and humans. With this we have almost came to the end of the chapter, जहाँ पे हम summarize करेंगे सब. ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा? इंग्रेडिएंट्स के बारे में. एडिबल जो कि चीजें हम खा सकते हैं उन्हें एडिबल कहते हैं. नेक्टर क्या होता है? स्वीट जूस ऑफ फ्लावर्स, जिसको कौन कलेक्ट करता है? बीज कलेक्ट करती है. क्या कहाँ ले जाती हैं उसे? अपने बी हाइव्स में. क्या बनाती हैं उससे? हनी. स्प्राउटेड सीड्स, हमने एग्जांपल देखा था मूंग और चना का, जिसमें से रूट लाइक स्ट्रक्चर आने लगता है, उसे हम स्प्राउटेड सीड्स कहते हैं. हर्बीवोर ओनली प्लांट बेस्ड डाइट, एग्जांपल में आएगा काउ, शीप. कार्निवोर ओनली मीट बेस्ड डाइट, लायन एंड क्रोकोडाइल. omnivore both. एग्जाम्पल में क्या आएगा? ह्यूमंस एंड क्रो. Okay, now let's have a look at the summary. There's a lot of variation in food eaten in different regions of India because it's prepared of different ingredients. The main source of food are plants and animals. Plant based क्या होगा? Ghee, wheat, आटा. Not ghee, I'm so sorry. Plant based क्या होगा? आटा, rice, pulses, oil. Animal based क्या होगा? Milk,
ठीक है, जिसके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं घी, कर्ड, चीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और क्या होगा एनिमल बेस्ड का एग्जाम्पल, प्रोमिनेंट एग्जाम्पल, चिकन, मटन, फिश। Animals which eat only plants are called herbivores. Examples दिए हैं, which eat only animals are called carnivores. Examples दिए हैं, animals which eat both plants as well as other animals are called omnivores. Example दिए हैं. I hope I was able to explain this chapter to you well. And with this, I conclude with this chapter. Thank you.